So today now we'll start Dalton atomic theory. First we should know that Dalton was the first scientist who discovered the name atom. According to him, atom was the smallest part of any matter and it can't be further divided. Although अब ये इसका पॉइंट गलत हो गया है क्योंकि हम आज एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में ब्रेक कर सकते हैं, बट जिस समय डाल्टन ने स्टार्ट किया था उसने ये कहा था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी ब्रोकन बिकॉज द मीनिंग ऑफ एटम वाज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो एंड द मीनिंग ऑफ एटोमियो विच कांट बी कट मीन्स विच कांट बी फर्दर ब्रोकन. सो डाल्टन ने फर्स्ट थिंग कही थी. सो आई एम जस्ट टेकिंग द पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. Every matter is made up of very small particles. These are called as atom. Atoms can't be broken. Atoms of each element are same. Although this point is right today that किसी भी एलिमेंट के जो एटम हैं वो सब के सब एटम्स सेम होंगे. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. अलग अलग एलिमेंट के एटम्स भी अलग होंगे. गोल्ड के एटम अलग होंगे, आयरन के एटम अलग होंगे, बट गोल्ड के एक प्योर गोल्ड में उसके सभी एटम एक जैसे होंगे. टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टू मेक कंपाउंड, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. और ये डाल्टन ने भी बहुत टाइम पहले बता दिया था कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन दे विल मेक अ कंपाउंड. बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज, this Dalton atomic theory failed, and these are the limitations. Limitations means why this theory was not successful. The first point is it could not explain the law of gaseous volume. Now what is law of gaseous volume? A very easy law. It is in your notes. The law of gaseous volume states that gases combine in a simple ratio, means like H2 plus Cl2 is equal to 2HCl. 1 H2, 1 Cl2 and 2 molecules of HCl. The ratio is 1:1:2. 1:1:2. So gases react to form product and there is a simple ratio between the reactant and product. For example, S plus O2 is equal to SO2. 1:1:1. There is no ratio in fraction. That's why this law is known as gaseous law of combining volume also, or law of gaseous volume. This law is known as, and Dalton was not able to explain why this ratio was so simple. Second point is it could not explain why the atoms of different elements have different masses, size and valencies. Actually डाल्टन को ये पता ही नहीं था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं. उसका बिलीव यही था कि जस्ट एटम एक राउंड शेप है जिसके अंदर चार्ज भरा हुआ है. अब वो चार्ज कैसे है कैसे नहीं है उसको कुछ मालूम नहीं था. सो अब डाल्टन ये बता नहीं पाया कि एटम्स किस तरह कंबाइन हो रहे हैं, बिकॉज combination depend upon the number of electrons and he was not aware about the electrons. That's why he was not able to explain कि why the atoms of different elements are different and or why the atoms of same element are same. He told that they are different or same, but why, what was the reason, he was not able to explain. Also he was not able to explain how the atoms are combining, because today we know that combination occurs due to the electrons. Electron may share, lose or gain. By this thing the bond forms between the different elements and compound form, but Dalton was not aware about the electrons. That's why he was not able to explain how the atoms combine and make the compound, and he was not able to explain the
force between the atom or molecule, means bond. This force is today known as bond. He was not able to explain the nature of force between the atoms of molecule. That in a molecule which type of bonding or force is there between the atoms of a molecule, because he was not known about the existence of the electrons, protons or neutrons. This was, and this is the main thing, that this theory got failed after some time, and this theory was replaced by a modern atomic theory. This theory states that atom can be broken into electron, proton or neutron. This is the today's modern theory of atom. It means in this theory the presence of electron, proton and neutron is explained, and it also states that we can break the atom into these fundamental electron, proton and neutron particles. Okay. The second point, it states that all the atom of same element may not have similar mass. You know about the isotope. This thing was in 9th class. उसने कहा कि कोई मीन्स कि एक एलिमेंट के सभी एटम का मास एक जैसा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल कार्बन, हमने डिस्कस किया हुआ 9th क्लास के अंदर कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, एंड कार्बन 14 इज यूज्ड एज ए कार्बन डेटिंग. किसी भी बहुत पुरानी बिल्डिंग या ट्री या किसी भी बहुत पुराने फॉसिल की एज निकालने के लिए कार्बन 14 टेक्निक को यूज़ करते हैं. अब कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 क्या है? इन कार्बन 12 6 proton and 6 neutron are present, but in carbon 13 6 proton and 7 neutrons are there, and in carbon 14 6 proton and 8 neutrons are present. Means किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हो सकता. प्रोटॉन का नंबर चेंज करने पर तो एटम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास भी चेंज हो जाएगा, उससे उसका चार्ज भी चेंज होगा. लेकिन न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसका नंबर चेंज होने से आपके आइसोटोप बनते हैं. तो कार्बन के इसी तरीके से नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के भी बहुत सारे आइसोटोप हैं. तो टुडेज थ्योरी स्टेट्स दैट all the atoms of same element may not have similar mass. Means the atoms of same element may have different masses, means they have isotopes. Okay. Third thing is different atoms of different element may have one or more similar property. कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं. मीन्स जैसे कि आपके 2 एटम्स हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट है, लाइक गोल्ड और योर आयरन, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती हैं. ऑल्दो सारी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होंगी. फॉर एग्जांपल आर्गन एंड कैल्शियम, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो है 40. दोनों का ही एटॉमिक मास जो है वो 40 है. द मास ऑफ आर्गन एंड कैल्शियम इज 40. तो इनका मास जो है वो सिमिलर आ गया, तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर सिमिलर आ गई है. डिफरेंट एटम्स में नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशो. जैसे कि पहले जो कंसेप्ट था कि दैट द एलिमेंट शुड कंबाइन इन अ सिंपल रेशो, तो आज मॉडर्न थ्योरी बोलती है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स जो कंबाइन हो रहे हैं उनका रेशो सिंपल ही हो. द रेशो कैन नॉट बी सिंपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है C12H22O11, शुगर का फॉर्मूला है ये. C12H22O11, इसका कोई भी आपके पास सिंपल रेशो नहीं बनेगा, आपको यही रेशो लेना पड़ेगा 12, 22, 11. ठीक है. एटम कैन बी चेंज इनटू अदर एटम. यस, इट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसम्यूटेशन. दिस वर्ड इज हियर, ट्रांसम्यूटेशन. In our periodic table today 118 elements are given, but up to 92 are natural.
means after 92 the elements present in the table are synthetic, उनको लैब के अंदर बनाया है from the uranium, that we'll discuss in the next chapter. So we can convert one atom into another atom, and this process is known as transmutation. And the last point of this theory is mass can be changed into energy according to Einstein theory, and this concept is used in the atomic reactor to produce the atomic energy, as well as in the atomic bomb also, that we can convert the mass into energy by using the Einstein theory. The theory was E is equal to mc square, and we know c means speed of light, and its value is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, a very high value. It means E is equal to, if we are taking only 10 gram of any matter, 10 into 3 into 10 raised to power 8, a very large amount of energy is being produced by the conversion of mass. A very small number is very small amount of mass can produce a very large amount of energy, and atomic bomb or atomic reactor is the example of this comment. Okay, so today we have discussed this Avogadro law as well as the modern atomic theory, and after that we'll discuss the Avogadro hypothesis and atomic mass number, etc. Okay.